हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम लोग देखने वाले हैं लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ आर चैप्टर आर एनवायरनमेंट, जो कि हमारे स्टैंडर्ड 10 साइंस के अंदर आता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इकोसिस्टम। इन सब के आंसर मैं आपको नीचे बताता हूँ और आपको ये पूरी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सेकेंड है वाई ऑटोट्रॉप्स आर एट द फर्स्ट लेवल ऑफ फूड चेन, गिव रीजन। इसका भी आंसर अभी हम लोग देखेंगे। थर्ड, इन अ फूड चेन ऑफ फ्रॉग्स, ग्रास, इंसेक्ट एंड स्नेक्स असाइन ट्रॉफिक लेवल टू फ्रॉग, टू विच कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर टूडे बिलोंग टू। ठीक है, इसका भी आंसर हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट का आंसर हम लोग देखते हैं, व्हाट इज फूड इकोसिस्टम। सो व्हाट इज इकोसिस्टम? सो इसका आंसर क्या है? ऑल द इंटरेक्टिंग organisms in an area together with the non-living constituents of the environment. Thus, an ecosystem consists of biotic components comprising living organism and abiotic components is called ecosystem. Okay, next, what are autotrophs and why they are at first level of trophic level? ठीक है, इसका आंसर क्या है? देखो, बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू ट्रैप सोलर एनर्जी विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ले सकते हैं एनर्जी। सो एज अ रिजल्ट दे प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस एंड मेक इट अवेलेबल फॉर द हेटेरोट्रॉप्स और द कंज्यूमर। देन थर्ड क्वेश्चन था हमारा, इन अ फूड चेन ऑफ फ्रॉग, ग्रास, इंसेक्ट एंड स्नेक असाइन ट्रॉपिक लेवल टू फ्रॉग, टू विच कैटेगरी द कंज्यूमर बिलोंग टू। सो फ्रॉग आर सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, इसके अंदर देख सकते हो ग्रास हमारा प्रोड्यूसर हुआ, इंसेक्ट प्राइमरी कंज्यूमर, फ्रॉग सेकेंडरी, स्नेक टर्सरी एंड ईगल फोर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ फूड चेन? Why it is the flow of energy in an ecosystem and directional. Explain briefly. Okay. A food chain is a series of organisms that eat one another so that energy and nutrients can flow from one to next. ठीक है, फूड चेन का मतलब होता है, एग्जाम्पल ग्रास प्रोड्यूसर हुआ, डियर अबीवॉर हुआ, प्राइमरी कंज्यूमर, लाइन सेकेंडरी कंज्यूमर। ओके, the energy enters in the plant from the sun through the photosynthesis process. ठीक है, photosynthesis process से एनर्जी आती है प्लांट्स के अंदर। दिस एनर्जी इज देन पास्ड ऑन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर इन अ फूड चेन। ओके, देन सेकेंड पॉइंट, the flow of energy in the ecosystem is unidirectional, or because the energy lost as heat from the living organism in a food chain cannot be reused by plants in photosynthesis. Okay, second, as energy moves progressively through the different trophic level, it is no longer available to the previous level. Okay, then during the transfer of energy through successive trophic level in an ecosystem, there is a loss of energy all along the path. ठीक है, थोड़ी लॉस होती है एनर्जी की। चलो, केस बेस्ड। Students in a school listen to the news read in the morning assembly that the mountain of garbage in Delhi suddenly exploded and various vehicles got buried under it. Several people were also injured and there were traffic jam all around. In the brainstorming session, the teacher also discussed this issue and asked students to find out a solution to the problem of garbage. Finally, they arrived at two means. One is self-management of the garbage we produce, and the second is to generate less garbage at individual level. ठीक है, पैराग्राफ है, इसमें क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है? सजेस्ट टू मेजर टू मैनेज गार्बेज वी प्रोड्यूस। तो इसका आंसर देखते हैं, ये आंसर। मेथड ऑफ गार्बेज मैनेजमेंट, फर्स्ट सिग्रेशन, इसकी डेफिनेशन आती रहती है। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल waste to be secreted and decomposed and broken down accordingly. ठीक है, then second है waste compaction, all the recyclable waste as metal cans,
प्लास्टिक कैंस एक्सेट्रा आर compressed and sent for recycling. ओके, सो ये हो गया इसका आंसर. नेक्स्ट, ये हो गया हमारा. ओके, नेक्स्ट, एज एन इंडिविजुअल व्हाट कैन डू वी डू टू जनरेट डेलीज गार्बेज, गिव 2 पॉइंट. सो हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं गार्बेज को जो हम लोग जनरेट करते हैं, जैसे कि रीयूजिंग एम्प्टी बॉटल्स. ठीक है, हमें रीयूज करनी चाहिए एम्प्टी बॉटल्स, बुक्स. फिर हमें रिड्यूस करना चाहिए नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जैसे कि पॉलीथीन एंड थर्माकोल. देन सिंप्लीफाई, हमें पैकेजिंग प्रोडक्ट यूज करनी चाहिए जैसे कि गिफ्ट्स एक्सेट्रा. थर्ड, सेकंड हो गया. लिस्ट 2 वैल्यूज द टीचर इंस्टिल्ड इन हिज स्टूडेंट इन दिस एपिसोड. चलो ये भी देख लेते हैं. 2 values the teacher instilled in his students. Develop a problem solving approach in them to be a good and responsible one. Awareness about environment. Next, और ये IMP क्वेश्चन है. ओके, मार्क इट IMP. How is ozone layer formed? States its importance to all life form on Earth. Why has the amount of ozone in the atmosphere dropped sharply in 1980s? ओके, इसका आंसर देखते हैं. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ द ओजोन लेयर. ओके, सो क्या होता है? ओजोन इज कंटिन्यूसली फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेस मीन्स अल्ट्रावायलेट रेस on molecular oxygen in the atmosphere. The high energy UV radiation split apart some molecular oxygen O2 into free oxygen atoms. So O2 जाता है UV रेस से, बनता है O प्लस O. ठीक है, फिर O2 प्लस O करेंगे तो O3 बनता है और वो होता है हमारा ओजोन. और ओजोन एक ऐसी चीज़ है जो हमें बचाती है डायरेक्ट रेस, जो भी हमारे जैसे सन है, तो ओजोन एक तरीके का प्रोटेक्टर है जो हमें अल्ट्रावायलेट रेस से बचाता है जो कि सन छोड़ता है. अगर सन की डायरेक्ट रेस हमारे मतलब हम अर्थ पे आएगी तो हमें बहुत सारी डिसीज़ हो सकती है. स्किन डिसीज़, हमें स्किन कैंसर जैसी डिसीज़ भी हो सकती है. सो डायरेक्ट रेस को बचाने के लिए एक प्रोटेक्शन लेयर यूज़ होती है जो ऊपर ऊपर होती है. ठीक है, सन के थोड़ा नीचे रहती है. ठीक है, सो लेयर को हम कहते हैं ओजोन, जो कि बनती है ऑक्सीजन के 3 लेयर से. वो हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रे से. और अभी के समय में हम लोग बहुत सारी मतलब डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं ओजोन लेयर को, जैसे कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ये गैस हमारे एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर से पास होती है, जो कि नॉर्मल हमारे ऊपर तो जाती है. तो नॉर्मल जो ऊपर होते हैं जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, उनसे रिएक्ट नहीं होती. वो सीधा जाती है तो होती है ओजोन से रिएक्ट, और वो ओजोन को डिस्ट्रक्शन करती है. ओके, सो उससे ओजोन लेयर थोड़ा कम होता जा रहा है. ठीक है, और इम्पोर्टेंस, ठीक है, एज इट इज हमने पढ़े. द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस व्हिच कम्स फ्रॉम, ठीक है, ओजोन रिफ्लेक्शन, फ्लोरोकार्बन. ठीक है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया. इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. नेक्स्ट, प्लास्टिक कप्स वर यूज्ड टू सर्व टी इन ट्रेन्स इन अर्ली डेज. This could be returned to the vendors, cleaned and used later. Coolers were used instead of plastic cups. Now paper cups are used for serving tea. What are the reasons for shift from plastic to cooler and then finally to paper cups? इसके reasons, ठीक है. So reasons for shift from plastic to coolers and then to paper cups are: plastic cups are non-biodegradable and harmful the environment. They were thus replaced by coolers. Making coolers, which is made up of clay on a large scale, resulted in the loss of top fertile soil. Now, disposable paper cups are used because the paper can be recycled and it is biodegradable and it is eco-friendly material which does not cause environmental pollution. Okay, देख लो, कूलर, डिस्पोजेबल ग्लास और पेपर. नेक्स्ट,
How can you help in reducing the problem of waste disposal? That and two method. ये भी एक IMP क्वेश्चन है. We can help in reducing the problem of waste disposal by some methods. Methods पढ़ते हैं. By separating biodegradable substance from non-biodegradable substances, by reusing, and recycling non-biodegradable substances. Okay. Next questions. Write two harmful effects of using plastic bags on the environment. Suggest alternative to the use of plastic bags. First, thank you for watching this video. Bye. Next part will come.